to the White House for the first in-person meeting of the Quad we've had. This grouping of democratic partners who share a worldview and have a common vision for the future, coming together to take on key challenges of our age, from COVID to climate to emerging technologies. It embodies an approach I spoke of at the UN earlier this week. When we met 6 months ago, we made concrete commitments to advance our shared and positive agenda for a free and open Indo-Pacific. Today, I'm proud to say that we're making excellent progress. Our vaccine initiative is on track to produce an additional 1 billion doses of vaccine in India to boost global supply. We're taking action on climate change with new partnership toward a zero emissions shipping. And today, we're also launching a new Quad fellowship for students from each of our Quad countries to pursue advanced degrees in leading STEM programs here in the United States. It represents an investment in the leaders, innovators, and pioneers of tomorrow. In sum, we're 4 major democracies with a long history of cooperation. We know how to get things done, and we are up to the challenge. And I'm looking forward to our discussion today, and I thank you. And now I yield to my friend from India. राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री मॉरिसन, प्रधानमंत्री सुगा, पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। Thank you very much, Prime Minister. Thank you, Mr. President. It is a great honour to be here with you here in this magnificent place, and I thank you for your leadership in bringing us together in person this time and to join our great friends, Prime Minister Modi and Prime Minister Suga and Secretary Blinken. It's good to be here with you also. We are liberal democracies that believe in a world order that favours freedom, and we believe in a free and open Indo-Pacific because we know that's what delivers a strong, stable and prosperous region so our citizens, our peoples, can realise their hopes and dreams for their futures in a liberal and free society. The Quad is about demonstrating how democracies such as ours, as you said, Mr. President, can get things done, that can deal with the big challenges that we face in a very complex and changing world. And there is no part of the world that is more dynamic than the Indo-Pacific at this time. A region that has extraordinary opportunity
wide diversity, great wealth, but many challenges that must be overcome. And we see the role of our nations. We see our home in the Indo-Pacific as the place that we wish to focus on to ensure that our peoples can realise everything they would have for themselves. So as we gather here together again as a Quad in person for the first time, in just 6 months from our last meeting, so much has already been accomplished, and we come together with great hope for what's ahead. 670 million at least safe and effective doses of vaccines already out there. 1 billion is our goal, Mr. President, and we will add more to that today. Using our national strengths collectively to manufacture and distribute these vaccines, to have the doses, but also to ensure they go that last mile, to ensure they are administered in all parts of the region. Working together on low emissions technologies that will indeed change the world and take the world to a net zero economy, a new energy economy. We're working to make cyberspace and emerging and critical technologies trusted and secure in open societies, solving problems and addressing the supply chain challenges that in many ways hold the keys to our security and our prosperity and our environment in the 21st century. So we stand here together in the Indo-Pacific region, a region that we wish to be always free from coercion, where the sovereign rights of all nations are respected and where disputes are settled peacefully and in accordance with international law. We come together in collective strength, with mutual respect, transparently and importantly as one. So thank you again, Mr. President, for joining us together as Quad leaders at this meeting. On behalf of the Australian people, can I thank all of the leaders of the Quad who share this great forum for their leadership in our region. I'm in no doubt that together our four nations multiply many times over the forces of hope for a free, open and inclusive Indo-Pacific. And with that, I'm delighted to hand over to my dear friend, the Prime Minister of Japan, Prime Minister Suga. ジョー・モディさん、またそこも再会は大変嬉しく思います。 प्रधानमंत्री ジョーのリーダーシップによって मोदी, आपको देख के बहुत खुशी हुई और आपके नेतृत्व के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था, मार्च के महीने में हम लोग पहली बार इस व्यक्तिगत आमने सामने बैठ करके होने वाली बैठक में आए हैं। इस समारोह से पता चलता है कि हमारा कितना अच्छा बंधुत्व है पूरे चारों देशों के बीच में, और हम जो एक वचनबद्धता रखते हैं एक खुले और स्वच्छंद हिंद प्रशांत क्षेत्र की। क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है चारों देशों की ओर से, जो कि मौलिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि एक खुला और स्वच्छंद हिंद प्रशांत होना चाहिए। 極めて重要な取り組みです。これまで4カ国は आज की 新 तारीख 型 तक コロナを含む क्वाड 地 ने 域が पूरा 直 सहयोग 面す दिया る है 課題に対応するため बड़े क्षेत्रों में, चाहे वो क्षेत्रीय चुनौतियां हों 実践的 या な कोविड-19 हो। 協力を進めてきました。本日はそのような協力 इस の समय पर इस समिट 具体 में 的進展を確認をする शिखर とと सम्मेलन も में に मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी हमने लक्ष्य पूरे किए हैं उनके बारे में हम सोच पाएंगे 新たな और 分野での क्वाड का जो 科学技術 समाज का जो 分野での लक्ष्य है उन्हें पूरा कर 人的 सकेंगे। 交流 क्लीन の拡 एनर्जी 大 का なども含め और आपस में हम日米 विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान कर 協 सकेंगे। 力をさらに一層拡大していくための मुझे आशा 議 है 論ができるこ कि とを हम 楽しみに एक していま बहुत す。 अच्छा और प्रासंगिक また4月 बैठक に रख सकेंगे। ジョー इसके にお願い अलावा をした福島県産の जो 米や आयात 牛 पर 肉 जो 野菜を बड़े 含む प्रतिबंध 全て लगाए の गए थे 日本 जापानी 産 खाद्य पदार्थों 食品に पर, 対す चावल 米 पर, 国の सब्जियों पर और 輸 अन्य 入規 चीजों 制 पर の撤廃は東日 जो 本 कि मैंने 大震 आपको 災の पहले 復興を निवेदन किया था 後押し अप्रैल す के る महीने में, वो 大 एक きな बहुत 一歩で बड़ा あり、心 कदम より है जो आपने 感謝 उठाया 申し है, 上げます。 जो あり कि がとうございます。 सुनामी और भूचाल के बाद आपने उठाया है। धन्यवाद आपका।